All right, so let's solve some questions from previously asked. These all appeared in previous NEET exams. Question number one: two vessels separately contain two ideal gases A and B. तो दो वेसल है, एक में A गैस है, एक में B गैस है, at the same temperature. Temperature is same. That is important. Okay. The pressure of A being twice that of B. The pressure of A is two times of pressure of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times that of B. The density of A is found to be 1.5 times that of B. मतलब rho A by rho B is 3 by 2. 1.5 is nothing but 3 by 2. This is what is given to you. Then आगे बोला है आपको the ratio of molecular weight of A and B is. आपको ratio of molecular weight पूछा है. Very simple. Do you remember PV is equal to nRT? Yes. Do you remember N is mass in gram upon molecular weight? RT. You have been asked molecular weight. तो सबसे पहले identify which parameters are constant. Volume is constant. R is constant. Temperature भी same बोला था तो constant. Right? Correct? तो क्या रहेगी, आपको क्या पूछा है? Molecular weight. Right? Are you sure about all these parameters? No. Why not? Because अभी तक density आपने लाया नहीं. So that is why I told you हमेशा क्या पूछा है और क्या पैरामीटर्स दिए हैं उसको इक्वेशन में लाओ. First bring density here. How do you bring density here? Is a simple thing. Pressure और ये molecular weight यहाँ पे equal to mass per unit volume RT. तो अभी आपके पास एक इक्वेशन आ गया, PV is equal to rho RT. Now you can identify constant parameters. क्या क्या constant है? RT. Right? Pressure is not constant क्योंकि उन्होंने बोला है pressure of A is 2 times of B. Then also density is not constant. So you will have from this equation molecular weight proportional to density by pressure. Density by pressure. So molecular weight of A to that of B will be equal to rho A by rho B and PV by PA. What is rho A by rho B? 3 by 2. What is PB by PA? PB by PA is half. 3 by 2 into half is 3 by 4. You will get this as option number A. Okay, तो क्वेश्चन सिंपल था. आपके पास दो वेसल है and by the way there are two vessels. Nothing is told about volume. The volume is supposed to take constant. But anyways वो volume वैसे भी mass upon volume density में जाएगा. So you don't have to worry about volume. Just given information is about density and pressure और पूछा है molecular weight. तो इक्वेशन बनाओ जिसमें pressure, molecular weight, density ये आना चाहिए. And then you have proportionality here. Molecular weight is proportional to density by pressure. Next question. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules? I will correct this. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule better? Okay. Become just sufficient for escaping from Earth's atmosphere. तो कौन से टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन escape Earth's gravitational field? This is what they're telling you, right? Asking you anyways. So how do you find this out? So first of all, do you remember what is the equation for VRMS? Under root of 3RT by M, right? But this is molecular weight. अगर आपको याद होगा यही इक्वेशन you actually write in terms of kT, 3 kT by mass in grams, kilograms. Okay. RMS speed का फॉर्मूला पता होना चाहिए in terms of mass, not in terms of molecular weight. And do you remember what is escape velocity from the surface of Earth?
ग्रेविटेशन 11th का चैप्टर था। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ gm/r। एस्केप वेलोसिटी under root of 2 times of critical velocity. Critical velocity is gm/r. This is what you need to know. By the way, escape velocity does not depend on mass of the object. अगर आपको भी अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करना है उतना ही वेलोसिटी लगेगा जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लगने वाला है। Why? Because it depends on g. What is g? Constant 6.6 10 power minus 11. M. What is this capital M? This capital M is mass of Earth. So this is mass of Earth, not your mass, not oxygen molecule का mass. This R is radius of Earth. तो ये constant होता है when you put 6.67 into 10 power minus 11 mass of Earth. If you remember, is 6 into 10 power 24 kilogram. R is 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 into 10 power 3 मीटर। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी यू शुड नो, इट इज 11.2 किलोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर पर सेकेंड आता है, राइट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर एस्केप होना है तो उसका आरएमएस स्पीड शुड बी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। तो VE is equal to VRMS, and VRMS, you know what it is. So VRMS, this is nothing but 11.2 into 10 power 3 under root of 3 kT by m, 3 kT by m, right? Squaring on both sides, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो when you square this 11.2 into 10 power 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 kT by m। ओके, k दिया है क्या? यस। m दिया है? यस। तो विल मेक दिस लिटिल इजी। एक काम करते हैं, हमको, क्योंकि ऑप्शंस कभी भी देख लेना पहले। डू यू सी 1.2 के बाद डायरेक्टली 2.5 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, मतलब हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की कोई जरूरत नहीं है। When you don't need exact calculations, don't waste your time. Do one thing. 11.2 को just say it is 11, because then you know 11 square is 121 into 10 power 6, 3 into value of k 1.38, 1.38 into 10 power minus 23। टेम्परेचर फाइंड करना है और m आपको दिया है 2.76 into 10 power minus 26, right? Solve this, बहुत इजी है। इसको और इजी कैसे करते हैं, इसको 120 बना देंगे, तो ये 1 जा, ये 40 जा, right? Good. Then roughly this is 1 जा, this is 2 जा, okay? Then you have your answer already. ये गया यहाँ पे 80, मतलब बात खत्म, 8 आने वाला है, ऑप्शन नंबर B. But just for your satisfaction, we'll completely solve this. 10 और ये नीचे आएगा तो प्लस और -3 बचेगा, -3 यहाँ पे जाएगा, -3 यहाँ पे जाएगा, मतलब 10 power plus 6 and 10 power minus 3 will be 10 power plus 3, करेक्ट। तो 10 power plus 3 इक्वल टू आएगा T, तो T इक्वल टू 8 into 10 power 4, 10 power 4, ऑप्शन बी। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का सबसे पहले वैल्यू पता होना चाहिए। बीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बीट एनी वन ऑफ यू, बीट मी, बीट दिस मोबाइल फोन, सबके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इफ द ऑब्जेक्ट वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहले ये पता होना चाहिए, किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में लिखा, एंड आरएमएस स्पीड वी हैव बीन राइटिंग इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। आपको ये पता होना चाहिए। ये कैसे आता है बता देता हूं, बट यू नीड टू नो दिस। सो डू यू रिमेंबर VRMS was 3RT by molecular weight? Do you remember molecular weight? By the way, number of moles के टर्म में लिखोगे तो N by Na, M by M, correct?
This is what you have. Good. So what you will do in the next step is, do you know R याद है R? R is Na into K. तो ये जो R था ये था Na into K. So I will write down here Na into K into P. Right? Correct. From here ये जो आपने लिखा है यहां से आपको मिल जाएगा N by M. Small m is Na by कैपिटल M. करेक्ट. क्लियर. इसका मतलब इस इक्वेशन में यहां पे इसकी जगह पे आप लिख सकते हो n by m. तो यू कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 3 Na by m की जगह पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय मास. ओके. और kT. आप समझेगा कि मैंने मॉलिक्यूल क्यों किया था, s क्यों हटाया था. दिस n is, if this is 1 you get 3 kT by m. 3 n kT by m. तो n की वैल्यू 1, तो you get 3 kT by m. Next question. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of helium, good, at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin. Amount of heat required. Do you remember, if you want to raise the temperature of gas, you need to provide heat. मतलब delta Q equal to N. आगे N CVDT and CPDT क्या करना है? CVDT Q, because they have said nothing about volume. So let us take N CV delta T. Right? Then you know number of moles is mass upon molecular weight. Okay. CV, if you remember, helium is monatomic. क्यों monatomic? It has 2 electrons. मतलब does not require more electrons. So that is why molecule का formation होता नहीं है. तो इसका मतलब it is monatomic. Monatomic का मतलब CV is 3R by 2. Monatomic gas के लिए CV होता है 3R by 2. What is delta T? T2 minus T1. Right. Mass कितना दिया है आपको? 1 gram. What is molecular weight of helium? Atomic weight मतलब 2 या 4? 2 या 4? If you put a 2 here, so 2 into 2 will be 4. 3 by 4. If you put 4 here, it will be 3 by 8. तो आपको सोचना है what is m. So, well, 3R by 2, T2 minus T1. So we are almost there, right, at the answer. क्योंकि R, as you know, what is R? Na into K. Na into K. 3 everywhere. NaK everywhere. ये तो हो नहीं सकता because you have T2 minus T1. Now only thing is, if you know what is M for helium, 4, sure. So you put a 4 here, so that will be 3 by 8. So 3 by 8 Na K T2 minus T1. Option number B. Next question. This is joke. I mean, of course. तुम्हें पता है हमने ये करके रखा है पहले ही. You remember ratio of Cp by Cv gamma है, तो in terms of degrees of freedom you have याद है ये? You have, what is this? 1 plus 2 by f या 1 plus f by 2 क्या था? हाँ. तो बाय द वे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. क्या पूछा है वो ही नहीं पता हमको. ओके. व्हाट इज दिस? अभी अभी मैंने बताया मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी क्या होता है? 3 by 2, right, into R. Okay. Then do you remember we have written this in a different way also?
1 plus 2 by 2, करेक्ट? राइट, राइट ना? नहीं, तो मुझे बताओ कि ये क्या है? 1 plus 2 by f was what? Ratio of specific heat is this in terms of degree of freedom is given by, ratio of specific heat in terms of degree of freedom is given by Cp by Cv. हाँ, 1 plus 2 by f is gamma. Good. How do you derive this? That is what I'm asking. What is Cp by Cv? मतलब gamma for monatomic gas? 5 by 3. 5 by 3. Correct? Can you write this as 2 plus 3 by 3? Yes. मतलब you can write it as 2 by 3 plus 1. मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3. मतलब 2 by f plus 1 है क्या? 1 plus 2 by f, ऑप्शन नंबर बी. वेट, ये आपने मोनो एटॉमिक के लिए प्रूव किया, रिजिड डायटोमिक के लिए कर लेते हैं. डू यू रिमेंबर फॉर रिजिड डायटोमिक गामा एस, इसको 2 से बढ़ाओ, इसको 2 से बढ़ाओ, रिजिड के लिए 7 by 5. कैन यू राइट दिस एज 2 plus 5 by 5? Yes. So can you write it like 2 by 5 plus 1? Yes. रिजिड डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन, तो 2 रोटेशन में टोटल कितने? 5. तो 2 by f plus 1. ये था किसका? रिजिड डायटोमिक. सिमिलरली फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक, मतलब गैस किसी भी टाइप का हो, यू ऑलवेज हैव रेशियो ऑफ गामा Cp by Cv is 1 plus 2 by f. ये हमने पहले भी डिराइव किया है, एंड दैट्स व्हाई you don't have to write down. You already know this. We have derived this. F by 2 मत कर देना. It is 1 plus 2 by f. Next question. 1 mole of an ideal gas undergoes a process described by the equation PV raised to 3 equal to constant. The heat capacity of the gas during this process is. Well, by the way, do you remember something PV raised to something equal to constant? Which process was that? Isothermal. How many processes have you learned? Isothermal. Isothermal process मतलब it occurs at constant temperature. मतलब it will obey Boyle's law. मतलब PV equal to constant is isothermal process. Do you remember हमने adiabatic process भी सीखा है? हाँ. What was the equation for adiabatic process? Because it does not occur at constant temperature. PV raised to gamma equal to a constant. Okay, this is adiabatic process. ये Boyle's law obey क्यों नहीं करता है? Because this process does not occur at constant temperature. Good, right? Do you see this and this as similar? Yes, right? So this process is no. That is what I wanted to tell you. No, it is not adiabatic. तो PV raised to something देख के हमेशा adiabatic की तरफ नहीं जाना. अभी अभी आपने बताया मोनोएटॉमिक के लिए 5 by 3 मतलब कितना in terms of fraction? How much is this? 1.6 roughly. Good. This is 1.4, right? आपको याद होगा एक टेबल बनाया था हमने, मोनोएटॉमिक, देन रिजिड डायटोमिक, देन नॉन रिजिड डायटोमिक. अगर आपको याद होगा तो 1.6 गामा होता है मोनो के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, देन रिजिड डायटोमिक के लिए 1.4, नॉन रिजिड के लिए 1.4 से भी कम. तो गामा की वैल्यू क्या हो रही है? 1.6, 1.4, कम होता जा रहा है. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गैस कौन सा होता है आपके पास? मोनोएटॉमिक. जब मोनोएटॉमिक का मैक्सिमम गामा है, कितना है मैक्सिमम? 1.6. इट कैन नॉट बी 3. ओके, राइट? तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है. अदरवाइज यू विल कंपेयर एंड से गामा इक्वल टू 3, सम इमेजिनरी गैस. Okay, you cannot have a gas with gamma equal to 3. Good. So remember this, right? इन्होंने बोला है कि एक गैस है, it is undergoing process by the equation PV raised to 3 equal to constant.
तो पी वी रेज टू 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पहले कंपेयर करो, कंपेयर विथ पी वी रेज टू सम कांस्टेंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो बोलना होगा गामा बोल नहीं सकते क्योंकि गामा इज रिजर्व फॉर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। आई कॉल दिस एज अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3, राइट। क्या पूछा है आपको? हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, टोटल हीट कैपेसिटी इज सीवी। याद है क्या? सीपी प्लस सीवी, याद है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, और लिखा था आपने? नहीं, कहां लिखा था? Myers relation. Do you remember Myers relation? Cp is equal to Cv plus something. वही है ये, दिस इज द सेम। C इक्वल टू Cv प्लस Cp लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमने Cp लिखा क्यों नहीं? क्योंकि हमको बताया नहीं कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्लस R, प्लस R, प्लस R, गुड। Only difference here that you will have is there is something in the denominator 1 minus alpha. तो जनरल प्रोसेस व्हेन पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, व्हेन पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट भी नहीं है, तब पीवी रेज टू अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट लेना। अल्फा की वैल्यू 3 है एंड यूज दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर यहां तक? देन मोनोएटॉमिक गैस, व्हाट इज सीवी फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 3r/2 प्लस r 1 minus 3। ओके, how much is 1 minus 3? Minus 2. तो 3r/2 minus r/2, 1.5 में से हाफ गया तो कितना बचता है? अरे 1.5 है, 3/2 how much? 1.5, और ये कितना है? हाँ, 1.5 में से हाफ गया तो 1, तो 1 मतलब r। Do you see anywhere r? Yes, option number A। तो remember this, सबसे पहले this is not isothermal process, this is not adiabatic process, it is some other process which is described by this equation। compare with PV raised to alpha, gamma लिखना नहीं। the moment you write gamma मतलब you are treating it as adiabatic, you cannot do that। alpha equal to 3, then you remember Myers relation, CV plus something, CV plus R gives you CP, correct। सिर्फ डिफरेंस इतना है यहाँ पे, ये मायर्स रिलेशन ही है, इट इज 1/अल्फा। सिर्फ डिवाइड करना है आपको, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड आउट व्हाट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी ओरल 2019 नीट। Increase in temperature of a gas filled in a container would lead to decrease in intermolecular distance? No. If temperature increases, that means molecules have more energy, that means they tend to go away from each other। तो intermolecular distance तो कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। Okay. Increase in its mass, ऐसा कभी होता है क्या? You give temperature energy and it increases mass? No. Increase in, done। Why? Because if you give more energy, they start moving with more velocity and that's why half mv square, v बढ़ेगा तो half mv square बढ़ेगा, मतलब kinetic energy increases। so simple। two balloons are filled, one with pure helium and the other with air। if the pressure and temperature of these balloons are same, तो सबसे पहले I would like to note down what are constants। pressure and temperature both are constant। okay, then the number of molecules per unit volume, ये ध्यान देना, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, एनआरटी मतलब एनआरटी बाय एनए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे लिखते हो। आपको पूछा है मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब दे आर आस्किंग यू व्हाट इज एन बाय वी। सो एन बाय वी, ये v यहां पे शिफ्ट किया, इट विल बी p एन ए अपॉन आर टी, राइट। p और t कांस्टेंट, एन ए कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो n बाई वी भी कांस्टेंट, क्योंकि सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मतलब n बाई वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम इन बोथ बलून्स। डन। Next question, very good।
The figure below shows the plot of PV by NT versus P. तो सबसे पहले PV by NT क्या है वो देख लो. You know PV equal to NRT, right? So PV by NT is R, which is constant by the way. ठीक है, अब देखते हैं आगे. For oxygen gas at two different temperatures. So this temperature T1, this temperature T2. Okay. Read the following statements concerning the above curves. The dotted line corresponds to ideal gas behavior. Dotted line, okay, corresponds to ideal gas behavior. Good. Then T1 greater than T2 check करना पड़ेगा. देखते हैं. The value of PV by NT at a point where the curves meet. कहाँ कहाँ curves they are meeting? They are meeting over here and over here. Okay. On the y-axis is same for all gases. जब आप बोल रहे हो PV इक्वल टू NT R है और R कांस्टेंट है तो हर एक गैस के लिए वो सेम होगा. मतलब स्टेटमेंट 3 तो एनीवेज इज ट्रू, राइट? द डॉटेड लाइन करस्पॉन्ड्स टू आइडियल गैस बिहेवियर. आइडियल गैस बिहेवियर ये व्हाट आर यू प्लॉटिंग हियर? PV बाय NT मतलब व्हाट? R. ये R है, करेक्ट? आइडियल गैस बिहेवियर में PV by NT is all constant at a given pressure, given volume and given temperature and given number of moles. R is constant, है ना? और आइडियल क्यों बोला है? Because you know आइडियल गैस बिहेवियर में do you consider potential energy? No. मतलब you assume molecules of gases are non-interacting. Do you remember one more assumption was there? The total volume occupied by the gas molecule is very very small compared to the total volume of the container. Okay, so this is what you have. So R is constant. So statement number 1 भी correct है. Okay, so by the way this dotted line corresponds to ideal gas behavior. Yes, देखो पहले समझ लो. Why I am saying yes? Because अगर R constant है तो it does not change. मतलब it will be a straight line, right? So for ideal gas R is a constant at any pressure, which means it will be a straight line. That is also true. तो statement 3 जो था वो true था क्योंकि जहां जहां पे intersection होगा it is same for all gases because intersection means R and R is constant for all gases. Number 1 भी true है. T1 greater than T2. This is something you need to understand. T1 greater than T2 है या उल्टा है? How do you work this out? T1 greater than T2. Do you see R is inversely proportional to T? Correct? Right. तो अगर T ज्यादा है तो R कम होगा. करेक्ट? लुक एट दिस कर्व. ये जो कर्व है यहाँ पे, डू यू सी दिस कर्व? ये T1 का कर्व है. ओके, राइट? करेक्ट? इफ T1 is greater, R will be less. Is R less compared to the other graph? अरे इतना क्या सोचना है? Is this less or no? Yes. T2 is less. T2 लेस तो R की वैल्यू ज्यादा, राइट? तो कर्व ठीक है. आई टेल यू इन मैथमेटिकल वे, नो इश्यूज. ठीक है, नो प्रॉब्लम. डू यू नो R is inversely proportional to 1 by T, मतलब inversely proportional to T. Do you know how inverse relations look like mathematically? तो आज आपका होमवर्क, you have Android phones, there is free software graph plotter, download and check कि how y is proportional to 1 by x looks like. एक बार चेक करो, समझ में आ जाएगा what I am saying. So by the way, this is correct provided you understand graphs. So 1, 2 and 3 all statements are true. यही पूछा है, which of the following statement is true? All of the above. So all of these are correct statements. तो ग्राफिकल क्वेश्चंस पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा आपको. यू हैव टू अंडरस्टैंड नंबर 1
Dotted line corresponds to ideal gas behavior. Yes, because for ideal gas, R is always constant irrespective of pressure, right? So R is always a constant at any pressure. ये ideal gas के assumption से आता है. Number 3, for real gas, PV by NT, where the curves meet, right, is same for all the gases. Number 2 is right provided if you understand graphs. तो तीनों ही सही है. Option number C. You don't have to write anything. All right. So this question we will continue in a while. Okay. So exactly for this reason I was telling you, you need to know the difference between real gas and ideal gas. So now in this question, if pressure of carbon dioxide, real gas, ध्यान देना इस पे real gas है, it is a real gas, in a container is given by P equal to RT upon 2V minus B minus A upon 4B square. Then mass of the gas in container is how much? आपके पास carbon dioxide gas है, treated to be real, right? Pressure is given by this equation. Then mass of the gas in the container is given by how much? How much mass? अगर pressure का ये equation है तो mass कितना? First of all, you should know the difference between a real gas and an ideal gas. जैसे मैंने आपको बताया, things are more or less same. Ideal के लिए PV equal to होता है nRT. Real gas के लिए gas equation is given by van der Waals equation. van der Waals equation आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं. P plus something V minus something equal to nRT. Okay, so P plus n square A by V ऐसा आता है वो, V minus n into B. This is what you get. Well, by the way, ये क्यों आया? There are two assumptions of ideal gases. Non-interacting, correct? Non-interacting gases जब होते हैं, इसका मतलब there is no potential energy term, right? तो pressure is less compared to the real pressure. इसलिए real gas में extra pressure का term आएगा. तो P plus something. So this terms comes from intermolecular forces. Ideal gas में आपने forces consider किए थे क्या? नहीं. You said the gases are non-interacting, but real gases के जो molecules है they interact. So this term n square A by V is from intermolecular forces. This term comes from intermolecular forces, right? Then मैंने अभी बताया आपको, according to assumption number 2, क्या था? The actual volume occupied by the gas is far less compared to the volume of the container in which the gas is enclosed. फिर भी आपने पूरा वॉल्यूम ले लिया गैस कंटेनर का, तो माइनस टर्म हियर मींस द एक्चुअल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर रहे हो, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लेस, प्लस मत कर देना, इट विल मीन द गैस इज ओवरफ्लोइंग कमिंग आउट. ओके, तो माइनस मतलब this gives you actual volume occupied by the gas. So this terms comes from actual volume. तो ये पता होना चाहिए at the first place. You should know this. Okay, good. Then ये जो equation है इसको इस form में लाना है. Once you bring this equation in this form, you can compare and find n. What is n? Number of moles. Number of moles मिल गया. So do you remember number of moles is mass upon molecular weight, और molecular weight तो पता ही होगा 44. तो क्या करेंगे हम, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे. कैसे लाएंगे? डू यू सी, यहाँ पे RT, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे RT, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2V माइनस B, यहाँ पे V माइनस NB. तो इसको पहले डिवाइड करो, तो यू विल हैव P plus n square A by V equal to nRT by V minus NB, right? Then
ये जो टर्म है इट विल गो देयर. तो P इक्वल टू एन आर टी वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए बाय वी. इक्वेशन नंबर 2. इसको कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 के साथ. ओके गुड राइट. हाँ तो डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे A है फिर यहाँ पे B क्यू बी स्क्वायर कैसे आया. तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू वॉल्यूम ओनली राइट. एक बार चेक कर लो. व्हाट यू डिड वाज इसको सिर्फ इस टर्म को सिर्फ वहां पे डिवाइड किया राइट. राइट तो डिवाइड करने के बाद यू गेट दिस. फिर इसको शिफ्ट कर दिया. अब आप पहला और यहाँ का पहला भी कंपेयर कर लोगे तो बहुत हो गया. तो व्हाट विल यू डू इज क्या करोगे. हाउ विल यू कंपेयर. यू विल से एन आर टी बाय वी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी अपॉन 2v माइनस बी. कैंसल कैंसल. वैसे सोचने की जरूरत नहीं थी. आपको मिल गया n. यू हैव नंबर ऑफ मोल्स एज हाफ हियर. और अगर यहां से भी कंपेयर करोगे n स्क्वायर यू सी हियर 1/4 मतलब n स्क्वायर इज 1/4 मतलब n इज हाफ. बट एनीवेज यू कैन आल्सो फाइंड इट फ्रॉम हियर आल्सो. यहां से भी मिल जाएगा आपको. जस्ट सॉल्व दिस. फाइंड आउट व्हाट इज n. n हाउ विल यू फाइंड आउट n. कैसे फाइंड करोगे. आज ध्यान नहीं है. 2nv माइनस nb इक्वल टू v माइनस nb. करेक्ट राइट. यस और नो. अरे 2nv माइनस nb इक्वल टू v माइनस nb. कैंसल और कैंसल. सो डू यू हैव 2nv इक्वल टू v. यस. डू यू हैव n इक्वल टू हाफ. यस. But n is mass upon molecular weight, that is half, right? So m is molecular weight by 2, that is 44 by 2, that is 22 gram. Do you have answer as 22 gram? Yes. So first of all, you need to know that ideal gas equation में corrections consider करने पड़ते हैं if you are talking about real gas. You need to consider intermolecular forces which are given by van der Waals equation. उसको बोलते हैं हम लोग van der Waals forces. सुना है कहीं पे van der Waals forces. Force of attraction, force of interaction between molecules of a gas, right? NB कहाँ से आया. Because actual volume occupied by the gas is far less compared to the volume of the container. इसलिए minus किया हमने. So then you just need to compare these two equations and find number of moles. Once you have number of moles, you have mass. Done. Next question. You have for a gas at temperature T, root mean square velocity is denoted by VRMS, most probable speed VMP, and the average speed VAV over the relation. At a given temperature, कौन सा वेलोसिटी किससे ज्यादा है इतना ही पूछा है. यू हैव VRMS. डू यू नो VRMS का फॉर्मूला. अंडर रूट ऑफ 3RT by m. That is under root of 3 under root of RT by m. Under root of 3 is 1.732 into RT by m. So it is into RT by m. तो फॉर्मूला पता होना चाहिए. This is what you have. This is VRMS. Do you know what is most probable speed का formula? Because if you know formula only, then you will be able to solve. If I'm not wrong, it is yes. Most probable is average. 11 का पहला चैप्टर. एरर याद है. एरर अगर आपको आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका रियल वैल्यू नहीं पता तो फिर आप कैसे फाइंड करते हो रियल वैल्यू. एवरेज. एंड एवरेज इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल. ओके तो मोस्ट प्रोबेबल speed for a gas at temperature T is equal to 2RT by m. So formula पता होना चाहिए. That's it. This is under root of 2 under root of RT by m. What is root 2 value? 1.414 root of RT by m.
right? Then you should know what is average. What is average? Average ना, average ही बोला है ना? Yes, average बोला है. What is average? नहीं पता, नहीं पता होगा क्योंकि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. तो इट इज अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम. तो ये आपको पता है, इट इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम VRMS. मोस्ट प्रोबेबल मैंने बता दिया, अंडर रूट ऑफ 2RT बाय एम. ओके, एवरेज स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम, मतलब अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई RT बाय एम अंडर रूट के साथ. देन डू यू नो व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 8? 4 into 2 मतलब 2 root 2 by pi under root of RT by m. Do you know what is the value of root 2? 1.414 and 1 by pi is 0.318 under root of RT by m. Right? Right. This is 1.4 into 2, 2.8. 2.8 का 1/3, 2.8 into 0.3. What is 2.8 into 3? 28 3 का कितना होता है? 84. Sure? Are you sure? Yes. 84. तो 84. Remember, ये कितना था? 2.8 multiplied by 0.3. Right? 28 3 was 84. So this will be 0.84 RT by m. Correct? क्या था ये? V average. Right? सबसे ज्यादा कौन सा है? RMS, क्योंकि ये फैक्टर्स तो सबके पास है ना, रूट ऑफ RT by m. बट यहाँ पे 1.73, यहाँ पे 1.4 और यहाँ पे 0.8. तो सबसे ज्यादा कौन सा है? VRMS. उसके बाद VMP, उसके बाद VAV. कहाँ दिख रहा है ऐसा? डू यू सी इट समवेयर? वेयर इज दैट? सबसे ज्यादा VRMS, बट वेयर डू यू सी? वेयर इज द राइट आंसर? डू यू सी एनीवेयर? Of course, according to you, what you just said is, according to what we found out, VRMS should be greater than V most probable, should be greater than V average, right? So ऐसा कहाँ है? I don't see it anywhere. Do you see it anywhere? No. तो either options are wrong or the formula is somewhere wrong. So which is wrong? तो अगेन अ स्मॉल असाइनमेंट, क्योंकि जो हमने किया दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल. सिर्फ एक काम करना है, आपको गूगल करना है. क्या गूगल करना है? आपको चेक करना है व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ गैस. क्योंकि अगर ये V एवरेज की जगह पे V मोस्ट प्रोबेबल होता है 0.84 अंडर रूट ऑफ RT बाय m, और V जिसको आपने मोस्ट प्रोबेबल बोला है उसको एवरेज बोलते हो, मतलब कितना? 1.4 अंडर रूट ऑफ RT by m. देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्योंकि VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल. ऐसा दिखता है क्या कहीं पे? ऑप्शन VRMS greater than V average greater than V most probable, right? So this question you have to check formula once, right? So what is assignment for you? What is assignment for you? To check out formulas. So what you have to do is check the formulas of assignment, because this is how you remember. Assignment, check what is V most probable and V average. ये चेक करके आओ, एक बार चेक करो. You will always remember कि what will be the correct answer. And sometimes they will ask you to find out what is most probable speed. So you cannot use this formula. Sometimes they will ask you find out average speed. So you cannot again use RMS का formula. So that is why you need to know these two formulas. Okay.
So I want answer for this by tomorrow. So let us stop here for today.